Hello kids, welcome to the class of English class 4. The chapter number is 14, The Mysterious Tree House. Story. About the story. This is the story of three friends. They went for a holiday trip to their grandparents' place. They noticed a mysterious tree house there. So kids, this is the story of three friends who went for a holiday trip to their grandparents' house, and there they found a mysterious tree. Let's read the story and know how was the mystery. So kids, let's read this story and get to know how was the mystery. Read and enjoy the story. Rohit, Ankita and Karina were three cousins and went for a holiday trip to their grandparents' palace in Mussoorie. They were having their winter vacations. Since they wanted to see the snowfall, they planned the trip. So kids, Rohit, Ankita and Karina, ये तीन cousins थे जो holiday trip पे अपने grandparents के घर जाना चाहते थे जो मसूरी में located है, and उनको जो है winter vacations मिली थी and उस time पे जो है वो snowfall को देखना चाहते थे, उसको experience करना चाहते थे. That's why उन्होंने इस trip के लिए plan करा. The grandparents were delighted to see the kids. They embraced them and huge affection. So उनके grandparents जो है काफी ज़्यादा delighted हुए बच्चों को देखकर, and उन्होंने जो है huge affection के साथ उनका welcome करा, उनको embraced करा. The grandmother had prepared their favorite dishes. The kids praised the culinary skills to their grandmother like always. Since they were fatigued after the long journey, they went to bed early that night. So kids, उनकी grandmother ने जो है उनके favorite dishes बनाए थे, and बच्चों ने जो है उनके skills के लिए काफी तारीफ करी. And उस दिन जो है वो काफी ज़्यादा थक गए थे क्योंकि उन्होंने long journey travel करी थी. That's why वो रात को जल्दी सो गए. The next morning, they all woke up early and saw there was snow everywhere around. They guessed there might have been a snowfall at night. They took bath and clad themselves in super warm clothes. They had their breakfast and went out to enjoy the snow after seeking permissions from the grandmother. So kids, next morning वो जल्दी उठ गए सब जने, and उन्होंने जो है देखा कि हर जगह जो स्नो ही है, and स्नो को देखकर उन्होंने गेस करा कि मे बी रात को जो है स्नोफॉल हुआ होगा. and उसके बाद उन्होंने बात लिया and खुद को जो है वार्म क्लोथ्स में कवर करा, क्लैड करा, and उन्होंने उसके बाद ब्रेकफास्ट करा and स्नो से खेलने के लिए जो है उन्होंने अपनी ग्रैंडमदर से परमिशन ली and बाहर जाकर खेलने लगी. On the previous times when they come to Mussoorie, they were with their parents who always put barriers or dam to hang out alone. So kids, इससे पहले वो जब कभी भी मसूरी आए थे तो वो हमेशा अपने पेरेंट्स के साथ आते थे जो उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाते थे कि तुम्हें अलग जो है अकेले जाकर नहीं खेलना. Today they were actually on cloud 9 as they could explore the town on their own and without any foundations. So इस बार जो है सभी बच्चे एक cloud 9 पर थे, यानी बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि उनको जो है इस बार चांस मिला था कि वो अकेले जो है without any foundations जो है पूरे टाउन को एक्सप्लोर कर सके. They were traversing through the mall road and having lots of fun. When they reached the end of road, a tree house caught their attention. So kids, वो सभी जो है मॉल रोड के थ्रू ट्रैवर्सिंग कर रहे थे and उन्होंने काफी ज्यादा एंजॉय करा. and जब वो रोड के एंड पर गए तब उनका अटेंशन, उनका नोटिस जो है ट्री हाउस पर गया. When they were staring at it, an old man passing by them asked them not to stare at the tree house as it was haunted. Rohit laughed it off, but Ankita and Karina were a little scared. So kids, जब वो उस ट्री हाउस के अंदर स्टेयर कर रहे थे तब एक ओल्ड मैन जो है वहां से जा रहा था एंड उसने जो है उन बच्चों से कहा कि उस ट्री हाउस पर जो है स्टेयर मत करो क्योंकि वो जो है हॉन्टेड है. रोहित जो है ये बात सुनकर हंसने लगा, लेकिन जो अंकिता और करीना थी वो थोड़ा डर गई. Rohit was an intelligent boy and didn't believe in supernaturals. He told the grandmother one day that he would came late as he wanted to see beauty of Mussoorie at night. So Rohit जो है एक इंटेलिजेंट बॉय था और वो इन सब सुपरस्टिशियस नेचुरल्स में बिलीव नहीं करता था.
उसने अपनी ग्रैंड मदर से कहा कि एक दिन जो है मैं ग्रैंड मदर ले जाऊंगा, क्योंकि मैं जो हूँ मसूरी को नाइट की ब्यूटी में देखना चाहता हूँ। Grandmother agreed to him. After he pleaded much, that evening he went near the tree house when it got dark and he found none in vicinity. So grandmother जो है उस बात से एग्री कर गई, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा जो है रिक्वेस्ट करी थी। एंड उस रात को जो है वो रोहित जो है वो ट्री हाउस के पास गया जब बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था, एंड फाउंड इन विक्निटी। He climbed up on the tree to find the reality. His heart beat faster as he was ascending. And वो उसने जो है ट्री को क्लाइंब किया, एक्सटेंड किया रियलिटी जानने के लिए, और उसकी हार्ट बीट तेज हो गई थी। He took a deep breath and entered the tree house. Like fortune, and to his surprise, he found a group of Himalayan quail that was assumed to be extinct. So kids, उसने जो है एक डीप ब्रेथ लिया एंड ट्री हाउस के अंदर जो है एंटर्ड हुआ, अपना फुट रखा, एंड वो सरप्राइज हो गया जब उसने वहाँ पर जो है हिमालयन क्वेल के ग्रुप को फाउंड किया, जिनका माना जाता है कि वो अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। He was quite happy to see them and descended down the tree hastily and rushed back to home to share the news with all. And वो उनको देख के जो है काफी खुश हुआ, वापस से नीचे उतरा एंड जोर से भागा अपने घर ये न्यूज सबको बताने के लिए। He has resolved the mystery of tree house. एंड उसने जो है इस तरह से ट्री हाउस की मिस्ट्री को सॉल्व करा। सो किड्स, वहाँ पे जो है हिमालयन क्वेल थे जो लोग मानते थे कि अब वो एक्सटेंट हो चुके हैं। वर्ड्स टू नो: embraced means hugged, affection means love and warmth provide करना, culinary skills means cooking skills को culinary skills कहा जाता है। fatigued means tired, थकावट होना। seeking an attempt to again, seeking यानी किसी चीज को दोबारा करने का attempt। traversing means traveling करना। on cloud line means extremely happy, बहुत ज्यादा खुश होना। loads of means a lot of। hang out means spend time out a place, यानी किसी जगह पे जाके टाइम स्पेंड करना। staring looking constantly किसी चीज पर देखना, that is staring करना। haunted inhabited by ghost, haunted यानी जो एरिया inhabited होता है ghost के थ्रू। localities यानी जो एरिया के लोकल पीपल होते हैं। succumble to given to, reluctant means unwilling supernaturals related to ghost। ascending means going up, यानी जब कोई ऊपर चढ़ता है, ऊपर जाता है, that means the ascending। comprehension section A, objective questions, oral questions, give the answer orally। so kids, we will answer these questions orally। 1. Where did Rohit, Ankita and Karina go for a trip? Rohit, Ankita and Karina went for a trip to Mussoorie at their grandparents' house। 2. How did the grandparents welcome them? Grandparents welcomed them with their tight hug and grandmother have cooked their favorite dishes। 3. Why was the tree house called mysterious? The tree house was called mysterious because at night several sounds comes from that tree। A. Check the correct option। 1. Who were Rohit, Ankita and Karina? Rohit, Ankita and Karina कौन थे? A. Brothers, B. Sisters, C. Cousins। They were cousins। 2. The kids praised the dash skills of grandmother। Kids ने जो है grandmother की कौन सी skills को praise करा? A. Driving, B. Teaching, C. Culinary। It was the culinary यानी cooking skills। 3. The mysterious tree house was located at end of dash। so kids, जो mysterious tree house था वो कहाँ पे located था? A. Hill Road, B. Mall Road, C. Mussoories Road। It was at the end of Mall Road। 4. Rohit was an intelligent boy and did not believe in dash। रोहित जो है एक इंटेलिजेंट बॉय था, वो किस चीज में बिलीव नहीं करता था? A. Fun, B. Mysterious, C. Supernaturals। He did not believe in supernaturals। 5. Rohit was dashed to see Himalayan quail। A. Happy, B. Sad, C. Scared। He was happy। रोहित जो है हिमालयन कोयल्स को देख के खुश हुआ। B. Fill up the blanks।
1. The Dash had prepared their favorite dishes. The grandmother. 2. They guessed there might have been a dash at night. उन्होंने गेस किया कि रात में हो सकता है वहां पे घोस्ट हो. 3. They were dashed through the mall road and having lots of fun. They were walking. वो जो है माल रोड के थ्रू वॉक कर रहे थे और काफी ज्यादा फन कर रहे थे. 4. Next day, Rohit inquired the localities about the mysterious trash. Next day, रोहित ने जो है लोकेलिटी से इंक्वायर करा अबाउट द मिस्टीरियस ट्री हाउस. 5. He climbed up on the tree to find the dash. उसने जो है ट्री पर क्लाइंब करा टू फाइंड द मिस्ट्री. C. Write true or false against each statement. 1. The kids went to Mussoorie to see snowfall. Kids जो है मसूरी गए थे snowfall देखने. True. 2. The kids praised their grandmother's culinary skills. Kids ने जो है grandmothers की culinary skills को praise करा. True. 3. The kids were upset because they did not get to hang out alone. किड्स अपसेट थे क्योंकि उनको जो है बाहर जाकर अकेले खेलने की परमिशन नहीं मिली. फॉल्स. 4. They were staring at the mysterious road. वो जो है मिस्टीरियस रोड पर स्टेयर कर रहे थे. फॉल्स. 5. रोहित सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ माल रोड. रोहित ने जो है माल रोड की मिस्ट्री को सॉल्व करा था. नो, ही सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ tree house. It is false. Section B, written questions. D. Answer the following questions. 1. What happened when Rohit, Ankita and Karina reached Mussoorie? जब रोहित, अंकिता और करीना मसूरी पहुंचे तब क्या हुआ? They received a warm welcome from their grandparents and they get favorite dishes from their grandmother. Two, why were kids on cloud9? Kids जो है cloud9 पे क्यों थे? Because they were so happy that they got a permission to hang out alone. Three, what happened when kids were staring at the tree house? क्या हुआ जब kids जो है tree house पे stare कर रहे थे? When they were staring at the tree house, an old man was passing through there and he informed the kids not to stare at that tree as this is a haunted tree. Four, why was the tree house considered haunted? Tree house को consider haunted क्यों किया जाता था? The tree house was considered haunted because at night various noises comes from there.
5. How did Rohit solve the mystery of tree house? रोहित ने कैसे जो है ट्री हाउस की मिस्ट्री को सॉल्व किया? He climbed the tree alone at night and found Himalayan koals there. Section C, language. E, words power. Read aloud the following words. So kids, इन words को मेरे साथ loudly speak करिए. Embraced, fatigued, plenary, affection, permission, barriers, traversing, haunted, localities, reluctant, scumbed, ascending, descended. Match the animal with their sound. So kids, यहाँ पे आपको animal names given है, जहाँ पे आपको उनकी sounds given है. Correct animal को उसके correct sound के साथ match करना है. 1 dog, it is barks. 2 cow, it is runs. 3 lion, it is roars. 4 elephant, it is trumpets. 5 horse, it is neighs. F, grammar word. Active voice, subject does the verb's action. So kids, active voice subject जो है वो verb का action करता है. Passive voice, subject receives the verb's action. Subject जो है receive करता है verb के action को. So kids, active voice यानी sentence को वो लिखने का way जिसमें subject verb के action को करता है और passive voice में subject जो है verb के action को receive करता है. Let's see the example. Example 1, active. Active में है cat eats fish. Cat fish को खाती है. नीता does homework daily. नीता जो है daily अपना homework करती है. 2, passive. अब इन sentences को passive में कैसे लिखा जाएगा? Fish is eaten by cat. Fish को जो है cat खाती है. So kids, यहाँ पे जो है subject यानी जो cat है वो verb के action को receive कर रहा है. यानी cat जो है वो fish is eaten by cat. Homework is done by Neeta daily. होमवर्क जो है वो नीता डेली करती है. Describe whether the sentences are written in active or passive. So kids, यहाँ पे आपको sentences given है, आपको बताना है कि ये sentences जो है passive में लिखे गए हैं या active में. 1, she is reading the newspaper now. वो अभी जो है newspaper को read कर रही है. It is active voice. 2, those houses have been built. It is active voice. 3, Hindi is spoken in India. It is passive voice. 4, a letter was written to her some days ago. It is passive voice. 5, my mother is cooking food. This is active voice. 6, the friends have been looking forward to meet her. It is passive voice. Section D, creative work. Write a letter to your uncle telling him about your well-being and informing him about the trip.
you have planned to their place. So kids, आपको जो है लेटर लिखना है अपने अंकल को, एंड उस लेटर में आप बता रही हो कि आप कैसे वेलबींग हो, आप ठीक हो, एंड आप उनको जो है इन्फॉर्म कर रहे हो कि आप जो है प्लान ट्रिप कर रहे हो उनकी प्लेस पर आकर विजिट करने की। एंड एट द एंड यू विल योर्स लविंगली, अपना नेम आप मेंशन करोगे। सो किड्स, इस गिवन स्पेस में आप कंप्लीट लेटर लिखोगे अपने अंकल के लिए। उन्हें आप बता रहे हो कि आप उनके प्लेस पर जो है विजिट करने का प्लान कर रहे हो। थैंक यू किड्स, आई होप यू एंजॉय द लर्निंग। सी यू इन नेक्स्ट क्लास।